Hare Krishna. So what we have been doing so far, Shri Īśopaniṣad, we started from the background, then introduction, then invocation, and we went through very briefly all the 18 mantras. So what we started first mantra, and hopefully today we will conclude the first mantra. So let's go for it. Before that, let's just do the Mangalachan, take the blessings of Acharyas, Radha Krishna, and the whole parampara. Om. Jnanatimirandasya Jnanajanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Tapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yudhapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripal Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, Bhakta Vrinda ki jai. Jai Jai Shri Radhesham. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Yes, last time I was not here, so I've got a question or clarification on the quota. What our quota could be, or what it is, or because how do we know? How do we quantify the quota? Because it's on one side we support our our needs and our greed and our family, and so we keep on expanding. But sometimes I think that if that is our quota, then it's all what we are doing is all correct. And then sometimes we think that is it our greed overtaking or what we are doing? So it's difficult to quantify what it is. Very well. Yes, that's right, Mataji. Thank you so very much for that question, Mataji. The whole mantra 1 is based on that one word, quota. So would you mind, Mataji, we start and then we will touch base on that because we will speak a lot more about it. That's fine. I just thought this was a query, and so before we start, I will put it across to you so that you can explain it. Okay, Prabhuji, thank you. Very important to understand this, Mataji. So thank you so much for this question. So let's quickly recap what we did, and then we will start where we left, and then we will conclude mantra 1, including where we said the word Ishavasya and the quota. So we started saying that each and every mantra could be divided into Sambandha, Abhidhya, Prayojan. But then again, just in one sentence,
for the grouping what the words going to be, the mantras. So we said invocation and mantra 1. What is the principle? So Īśavasyam is the principle. And then invocation, everything is perfect. What we said, Om Purnamada Purnamidam. Then number 1, everything belongs to Ishwar, and this is what we call Īśavasyam. But then what is our quota if everything belongs to Ishwar? And we will discuss that. Then going forward, we are going to discuss how to live in the harmony, how to not follow few things, because if we follow them, then we will live in disharmony and we will see a lot of things happening these days. Then going forward, we will see the Ishvara, how we could understand with a spiritual vision, what we call Drivya Drishti. And the right and wrong Vidya, the knowledge, what kind of right, what kind of wrong knowledge, the examples being given. Then Upasana, the way we should worship and the way we should not worship. And then at the end, we will conclude to the prayers to Ishvara. And this is what Manu, who got these prayers, he's saying that he's praying to Krishna, praying to the Ishwar, that please reveal yourself. So the caveat is that without his permission, his mercy, we cannot see him. We cannot see the Lord. And this is what this means. But we will see. So these are the 18 verses, 18 mantras we have in Shri Īśopaniṣad. And then the very first one, glorification of Vedic knowledge. We have already discussed it. Now, Lord is the proprietor of everything. So Īśavasyam, and we will discuss that. Example of one's quota in nature. Now, Radhe Shyam Prabhuji has explained this very nicely. So we will discuss this quota. Then we will come back to this. Example of the quota in human possession of the earth. Like not only the nature has the quota, everything on this planet has the quota. Then the quota in the diet. It's very easy for us to understand, so we will discuss that. And then if we follow that, then what will happen? Then that's been, the mantra is concluded this one. So we will come back to this. So we have seen the principal Upanishads and Īśopaniṣad, which is the very first one. Isha is for the Ishwar, for the Lord, directly about the Lord. So there's no contradictions there. It's directly about the Lord. So this is what we are doing at the moment. Then we saw the different categorizations. So all the Upanishads, so each one of these, they are part of one of the 4 Vedas. Now this slide is not very clear, but if you want, I can see the way, when you stretch it, it has stretched a bit more. But if we see Shri Īśopaniṣad is here at the bottom, and this comes into Yajurveda Shukla Paksh. So right at the end, this one is Shri Īśopaniṣad. So Īśopaniṣad is part of Yajurveda. Okay. So in this, what we can see that how first, second, and third, all 3 mantras, they are coming together. And we can see how they're going to work together. We can briefly see it now, and then we will see them again at the end of verse 3. So we will see now how the next 3 or the first 3 verses will be, first 3 mantras will be. And when we will finish, complete the 3 mantras, then also we will conclude them. And again, the way we usually do, it's a repetition, and it's just the practice again and again. Again and again, we hear that, we try to understand it from different angles, from different perspectives. So this is what we will do. So very quickly, I will just read it through, and then we will go further. So, or maybe go here. Yeah. So what we say is here, everything animate or inanimate. So we can say living or non-living, that is within the universe is controlled and owned by the Lord. This is what we call proprietorship, that I control it and I own it.
One should therefore accept only those things necessary for himself which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. So let's discuss the word quota here. And throughout the session, we will discuss quota. The Mataji asked a very good question that sometimes it's not very clear for us that what is our quota. And the quota is there for us in almost everything, in all the walks of our life. For example, if we see we have the food. So the example of food is given. Now, very first thing is vegetarian food or non-vegetarian food. Quota means what belongs to us. So Krishna has given everything. So some of our friends from other religions, they say, why not eat non-vegetarian? Because God has given it, and God has given it for us. But then we try to understand, and Chaitanya Charan Prabhuji has explained it very nicely, that whichever way we think, and there could be different ways of thinking, we can understand that non-vegetarian food is not meant for human beings. Vedic injunctions are there. So in the Vedas, it's been mentioned that we should not do what we call ahimsa. We should not kill someone to feed ourselves. Then the question comes, but then the plants are also living. So why do we eat apple, oranges, bananas? Then we say, if you think about, these are fruits. They are not the plants itself. And we eat fruits when the fruits are matured and fruits are taken away from the plants, from the trees. And even if we think of the milk is a byproduct from the cow. And we take milk when milk is away from the mother cow. So in this way, if you think, it's easy to understand that vegetarian food, we can eat it. Fruits, we can just take it from the nature and we can eat it. We don't need to do any processing on it. Dry fruits, we can have it. Vegetables, a lot of vegetables, we can have it straight away. So this way we can understand something which nature has given is our quota. Right. And the non-vegetarian food, we have to process. And a lot of times, there was a time when our ancestors, they only used to eat non-processed food. So even the gas, the cooking on the fire came very late. Otherwise, it was all natural. The fruits used to be there. Now, this is one of the examples which way we can understand what belongs to us and what doesn't belong to us. There is an example where at the time of Srila Prabhupada ji, somebody said that, oh, I have put together this factory. And Prabhupada ji said, oh, great. So for the factory, you manufacture different products. So where do you get the ingredients from? And the person said, well, I buy the ingredients from the market. So for example, we buy lime scales, we buy coal, and anything we buy, we say, oh, Prabhupada ji asked the person, so where that person got these things from? As well, these things, for example, coal is a natural thing. It's there, the person only take it from there and bring it here. And I pay to him because I cannot go there. So I know diamonds come, a lot of diamonds, they come from Africa because African mines are there for the diamonds. But nobody creates diamonds, right? But still people bring it and people shape it and people sell it and people buy it and people say, these are my diamonds. So Srila Prabhupada ji said that, well, no, those ingredients, they come from nature, right? So you have the earth and you have the earthly elements, you have the minerals in the earth, everything belongs to Krishna, everything belongs to the Lord. And this concept is what we call Īśopaniṣad, that everything belongs to the Lord. So Srila Prabhupada ji said, now you buy from someone and that person is a kind of thief
because he takes it from the nature and sell it to you, and you also claim it to be yours, but it's not yours, it's Krishna's. So you are a thief. And then person thought, oh, okay. But just to save his face, he said, but Prabhupada, I make donation as well to Krishna, to the temple. And then Prabhupada also smiled and then said, okay, then you're not a very big thief. You're a small thief. But still, remember, we all are using things from Krishna. So this is the concept of Īśopaniṣad. Īśopaniṣad, everything belongs to Krishna, everything is owned by Krishna, everything is controlled by Krishna. Now we claim to be the proprietor, we claim to be the owners, and we claim to be the masters, but this is one of the biggest challenge we have, biggest hurdle we have in the path of spirituality. If you would like to get further in Krishna consciousness, then we have to take this proprietorship away. And we can understand, our body, mostly we consider our body as us. So we always look for, this is my hand, this is my nose, my eyes, my hairs, everything belongs to me, we say. And the internal organs as well. But can we control it? Can we control any of those things? So to some extent we can. If I want, I can move my hand. But what happens when we grow old? What happens when some injury happens? Why can't we move our hand then? Because this is moving due to us. Oh, then there are some limitations are there. Okay, no physical elements, but what happens when people go in coma? Their hand is still there, their legs are still there, but they cannot move it. Now, Srimad Bhagavatam explains it so nicely that each and every single body part is working due to a specific demigod, a Devi Devta. So there is another saying in India, well, I remember from my time in India, that all the 33 crore, like 3.3 million, 33 million Devi Devtas, demigods, they are there in our body. And that's so true. Now, not everyone's names are given, but who controls our eyes, who controls our ears, who controls our tongue, who controls our hand, who control our legs, they all are given. The names of those are given, like Indra controls, sun controls the eyes. So these things are given. The names are given. And it says, if these demigods, for some reason, if they're not happy, or maybe because of to deliver the past karmas, if they decide not to act, if they decide not to cooperate, then those body parts will go down. And then we think, then this is my hand, nothing has happened, but for some reason I've gone into coma, or not even coma. When people sit for a long time, when they get up, then it goes sleep, the way we say, and it's hard to move. I think nothing is in our control. Our heart, if you like to stop our heart for a while, oh, well, today is Saturday, let's give for a couple of hours, let's stop our heart, been working for so long. There is no machinery humankind has ever created, which has started and has never fallen down, except this human body, which of course we didn't create. We didn't, right? So this is all the purpose of the whole explanation, is the concept of Īśopaniṣad, that everything belongs to Ishwar, not to us. We think it's ours, but it's not. Another example, so we hire cook sometimes. So if we have a big function, we hire the cook. The cook will come in, we will give all the ingredients to cook. The cook will cook, but then at the end, cook will make the food, and then food is for us because we gave the ingredients to the cook. The cook will never ever able to claim that this food belongs to him or her, because ingredients were
given by us. Similarly, because this nature, the nature has been given to us by Krishna, by Ishwar, so we should not claim that this belongs to us. For example, the land, we buy land, we sell land. Of course, we should not stop doing it, but we should always remember this doesn't belong to us. This belongs to Krishna. A lot of time people say, oh, this is a planned child and this is unplanned child. Whichever way we think, it's Krishna's. We didn't have so much control over it, but still we had a little bit of control, right? And that's where the quota comes in. So all the food is there, but some certain food, so today is Ekadashi. On Ekadashi, the quota is that we should not eat grains. So today, grain is not our quota. So what we can or what we can't have, right? So for the cook, the quota is that the cook could utilize those things to prepare something, and then preparation is his service. But then the final product is not his. So his quota is only to get the benefits out of those services, because he can transform those ingredients from ingredients to a finished dish. But the final dish he will prepare, he doesn't have ownership on that, because that's not his quota. Similarly, because of our body, the way it's been made up, vegetarian food is our quota, but non-vegetarian food is not our quota. And even in vegetarian quota, the quota changes as our lifestyle changes. So when the kids are there, they can eat as much as butter, ghee they want. But as we grow old, we should check what's our quota now based on where we are. So if somebody lives in Middle East, it's very hot. The type of food, the quota we have is different. So even on practical level, if you think that's there, the knowledge, this kind of study we do, right? So the kids, they should read the books, but what kind of books they should read? That's also quota. So quota is where we understand what belongs to us and what doesn't belong to us. Quota is what we should do and what we should not do. Now, of course, there are many, what we say, gray shades. So it's not black and white. This is ours, this is not ours. What belongs to us, what doesn't belong to us, right? How much, like in karma, we say, we have the freedom, but how much freedom we have? So in Bhagavad Gita, Krishna says to Arjun, you have the freedom to fight or not to fight, but you don't have the freedom to control the outcome of it. So in your quota, it's whether you want to fight or you don't want to fight, whether you want to do devotional service or you don't want to do devotional service. But devotees will never able to claim that because I've done so many years of devotional service, I should get that. No. So the quota is how much we get and of course what we get. Okay. Let's get further and then we will see what are the differences. And I've just noticed maybe we have Hindi speaking devotees as well with us. Hare Krishna. So सभी भक्तों का स्वागत है. हमने अभी तक जो डिस्कस किया, श्री ईशोपनिषद के अंदर जो पहला मंत्र है, उसके अंदर जो सबसे पहला संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब ईशावास्यम, कि सब कुछ भगवान को, ईश्वर को बिलोंग करता है. बहुत से लोग इस चीज के ऊपर अपना अस्तित्व जताते हैं कि ये चीज मेरी है. हम जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि हम ये कहते हैं ये हमारी जमीन है, लेकिन हमको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी नहीं है, कि ये भगवान की है, हमने नहीं बनाई है. बहुत सारे, जैसे हमने बात करी, अगर हम घर में खाना बनाने के लिए किसी को बुलाते हैं और उनको हम सारी चीजें देते हैं, सामान देते हैं जिससे कि वो खाना बना सकें, तो वो खाना बनाने के बाद में वो खाना का जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो डिश उन्होंने बनाई है, वो हमको देंगे, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स हमारे थे बनाने के लिए. इसी तरीके से जो भी चीज हम यूज करते हैं वो भगवान की दी हुई होती है, तो इसलिए जो भी चीज हम बनाएं तो वो हमको भगवान को अर्पित करनी चाहिए. इसी वजह से जब हम बाहर से सामान लेकर आते हैं और घर में खाना बनाते हैं, तो खाने को पहले भगवान को अर्पित करते हैं,
ईशावास्यम, कि भगवान ये आपका है, कि हम ये नहीं कहें कि हमने बड़ी मेहनत करी, उससे जो पैसा आया उससे हमने जाके खाना खरीदा, तो ये हमारी ऑनरशिप है, ये हमारी, हम कहते हैं वाहवाही है, कि ऑल द ग्लोरीज टू अस, कि हमारी शाबाशी जिसकी वजह से हमने ये करा। नहीं, बिकॉज 15.15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्ने विष्टु मथा स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें वर्ष के अंदर ये कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूं, और ज्ञानम अपोहनम च, जो ज्ञान है वो मैंने दिया है। तो हम अगर हम अपनी बुद्धि लगाकर भी कुछ यूज करते हैं, तो वो बुद्धि जो है वो भगवान ने दी है। तो बुद्धि के भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भगवान की वजह से हमको मिले हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी बुद्धि लगा के भी कुछ हासिल करें, तो हमको उसके ऊपर ये ओनरशिप नहीं दिखानी चाहिए कि हमारी। और अगर हम इस तरीके से रहें तो हम बहुत ही हम्बल रहेंगे। इसी तरीके से हमने खाने की बात करी, हमने कोटा की बात करी। ये ईशावास्यम का कंसेप्ट है कि सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, और भगवान ने हमको हमारा कोटा दिया हुआ है। जैसे कि वेजिटेरियन फूड हमारा कोटा है, उसके अंदर भी हम कौन से आश्रम में हैं, क्या हम ब्रह्मचारी हैं, क्या हम गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, उसके हिसाब से हमारा कोटा चेंज हो जाएगा। कि हम अगर ब्रह्मचारी हैं, हम पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत एक्टिव हैं, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, बहुत कुछ वेजिटेरियन हम खा सकते हैं, हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम गृहस्थ में लगेंगे और उसके बाद और बुजुर्ग होते चले जाएंगे, तब हमको सोचना पड़ेगा कि हमको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कौन सी चीज अब हमारे कोटे में नहीं है। तो अगर हम ईशावास्यम और कोटा का ये, तो इसमें एक और वर्ड आता है माँ गधा। अगर हम वर्ड्स को देखें तो ये वर्ड्स है ईशावास्यम इदम सर्वम। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें, ईशा बाय द लॉर्ड, अवश्यम कंट्रोल, इदम दिस। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भगवान ने कंट्रोल किया हुआ। सर्वम, क्या कंट्रोल किया है? सब कुछ, ऑल एवरीथिंग कंट्रोल बाय ईश्वर। यत किंच्या, whatever, jagatam, within the universe, jagat, all that is animate or inanimate, तेना, by him, सब कुछ भगवान ने कंट्रोल किया हुआ है अपनी एनर्जी से। देन त्यक्तेना, सेट अपार्ट, भुंजिता, यू शुड एक्सेप्ट। सो हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? तक्तेना भुंजिता, हमारे लिए भगवान ने जो कोटा दिया है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी वेजिटेरियन फूड जो फल फूल के रूप में, फ्रूट्स के रूप में हमें भगवान ने दिए हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। माँ गधा नहीं करना चाहिए। गधा, endeavor to gain कस्य of anyone else the wealth। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो हमारे, इसको अगर हम देखें तो गृहस्थ की लाइफ के अंदर जो वैदिक इंजंक्शन बने हैं, उसके हिसाब से एक मैन एक वुमन के साथ में शादी करेगा, विवाह करेगा और गृहस्थ फैमिली में रहेगा, वो एक दूसरे के लिए कोटा है। किसी और के पार्टनर के बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि वो आउट ऑफ कोटा हो गया। जैसा जो अपना खाना है वो हमारे लिए सही है, किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए जो मीठा है वो आउट ऑफ द कोटा हो गया। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमारे लिए कोटा डिफरेंट होगा। और ऑफ कोर्स पूरे जेनरिक एक कोटा होगा, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए एक कोटा होगा, स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग के हैं तो उनके लिए इंजीनियरिंग बुक्स कोटा होंगी। कोई इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए अपने अपने और सब कोटाज हो जाएंगे। और उसके अंदर भी वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है, तो वो कोटा उनका अलग होता चला जाएगा। फर्स्ट ईयर का अगर फोर्थ ईयर का पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर को ना छोड़े, पहले अपना कोटा पूरा करे, उसके बाद में अगर वो दूसरे का पढ़ना चाहे। लेकिन फोर्थ ईयर का अगर ये कहे कि मैं फर्स्ट ईयर का पढ़ूंगा, तो वो उसके लिए कोटा नहीं है। तो पर्सनल circumstances will dictate what's our quota and what's not. And again, it's not that easy, and that's the reason we say sadhu, shastra and sangha, कि
हमको साधु, हमको गुरु की हेल्प लेनी चाहिए, गुरु से कंफर्म करना चाहिए क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है। शास्त्र, जो शास्त्र हमने पढ़े हैं, गुरु से पढ़ने चाहिए। संघ, वैष्णव्स के साथ में एसोसिएशन, गैदरिंग में पढ़ने चाहिए। गुरु, शास्त्र, संघ, इन तीनों से अगर हम हमेशा जुड़े रहेंगे तो हमको ये क्लियर रहेगा कि हमारा कोटा क्या है, अदरवाइज हमको ये कंफ्यूजन होती चली जाएगी। वैसे भी हम जितना समय एसोसिएशन में बिताएंगे धीरे धीरे क्लियर होने लग जाता है, अच्छा ये हमारा कोटा है, ये नहीं है। लेकिन गुरु, साधु, शास्त्र के साथ अगर हम रहें तो ये हमारे लिए इजी रहेगा समझना कि क्या कोटा है, क्या कोटा नहीं है। So this is what this verse is saying. Now if we go back to the presentation, we will come back to second and third because let's focus on mantra 1 for now. Īśāvāsyamidam jarnam yatkincha jagatam jagat tena taktena bhunjita māgirda kasya suidanam. Everything animate or any inanimate, living or non-living, that is within the universe's control and owned by the Lord. जो हमने देखा कि जो जीवित है उसमें आत्मा है, परमात्मा है, जो जीवित नहीं भी है उसमें भी परमात्मा है। तो हर चीज, हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। जैसे हम कहें, हम हमारे लिए तो हमारी जो पलकें हैं हम उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। One should therefore accept only those things necessary for himself. तो हमें सिर्फ अपना कोटा जो हमारे लिए जरूरी है भगवान ने दी है उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि लड़ना है या नहीं लड़ना ये डिसीजन आपके कोटे में है, लेकिन लड़कर क्या कंक्लूजन होगा, नहीं लड़कर आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो आपके कोटे में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। One should not accept other things knowing well to whom they belong. इसलिए जो भक्त हैं वो कभी भी किसी और के कोटे को हाथ नहीं लगाएंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उसके बारे में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उन्हें बिलोंग नहीं करता। और हम आगे जब देखेंगे तो हम समझेंगे ईशावास्यम के कंसेप्ट, सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, हमारा लिमिटेड कोटा है। इस हिसाब से अगर हम अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी बिताएंगे, we will understand how easy our life will be. Because remember, there will be some verses which will say how we can live in harmony, not only with the Lord, but everything in the world. It's so easy for us to maintain the harmony. अगर हम ईशावास्यम और तत्तेना भुंजिता के वर्ड्स को समझ सकें, इसलिए हम इनको बार बार याद करेंगे। How Brahmins and Kshatriyas rule. So the way it's been explained, we had these four. So obviously a lot of downside caste system, but only because people started making it associated by birth. But it's not supposed to be birth. It's supposed to be what do we do. So somebody who is born in apparent Shudra family could become a Brahmin. And we have many examples like this, many examples in our Shastra. So अगर हम समझें कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो कास्ट सिस्टम वेदों में है, वो कर्मों के हिसाब से है, जन्म के हिसाब से नहीं है। ये हम लोगों की कमी रही कि हमने इसको कर्मों के हिसाब से जोड़ा, हमने जन्म के हिसाब से जोड़ा। लेकिन अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जिन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से अपना वर्ण चेंज किया। तो कृष्णा, स्पिरिचुअल रेम, कृष्णा चाहे भौतिक संसार में हो या आध्यात्मिक में हो, वो आध्यात्मिक ही है। ब्राह्मण, भूदेवास, शास्त्रास, कौन किनको ब्राह्मण माना जाता था, तो ये ब्राह्मण का कोटा है अब, कि जो ब्राह्मण होगा उसके कोटे के अंदर है। अगर कोई अपने आप को ब्राह्मण कहेगा तो वो कभी भी वो ज्ञान अर्जित करेगा और ज्ञान बांटेगा, लेकिन कभी भी उसके पीछे ये नहीं होगा कि वो पैसा कमाना चाह रहे। So recently
we did a yajna at our place, at our residence, and for the new year, we invited a Brahmin, and I asked him how much I should give you as the donation. He said, whatever you like. And I'm saying, hey, in London. तो लंदन में हमारे यहाँ पे यज्ञ हुआ था, एक ब्राह्मण को हमने बुलाया और मैंने उनसे पहले पूछा, आने के बाद भी पूछा कि प्रभु जी हम आपको कितनी दक्षिणा दे दें, लेकिन उन्होंने कहा जो आप दें। और हमने एनवेलप में डाल के जो उनको दिया था उन्होंने खोला भी नहीं, वो अपने साथ लेके गए। वो एक असली ब्राह्मण होते हैं जिन, और वो 100% ब्राह्मण ही है, वो जिन पंडित जी की बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं करते हैं, वो यही करते हैं। तो ये ट्रू ब्राह्मण्स हैं जो कि पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका मकसद ये है कि वो भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, भगवान के बारे में ही वो आगे बताना चाहते हैं। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. I've just seen your message. Right. So then we have Kshatriyas. Then in Kshatriyas, they are supposed to rule and they are supposed to administrator. Now, when जब युधिष्ठिर महाराज और बहुत सारे भरत महाराज, बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए, जब वो राजा बने तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि जो उनके पास में टैक्स से पैसा आता है राजकोष के अंदर, वो उनका नहीं है, वो उनको मिला है ताकि वो सोसाइटी की हेल्प कर पाए। जैसे कि आज की डेट में हम काउंसिल टैक्स इकट्ठा करते हैं, तो वो काउंसिल टैक्स गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ने इकट्ठा लिया है, इकट्ठा किया है ताकि लोकल एरिया को डेवलप कर पाए। तो वो वहां पे हमें समझना चाहिए कि कोटा काउंसिल का ये है कि इकट्ठा करके वो डिसाइड कर सकते हैं कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन ये नहीं कि वो उसको अपना कोटा मान के कि ये पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, हम जैसे मर्जी से यूज करना चाहें। जैसे कि दुर्योधन ने बिना किसी से पूछे अंगराज, जो अंग का राज्य था, वो कर्ण को दे दिया था, लेकिन वो राज्य तो प्रजा का था। लेकिन अभी जो डेमोक्रेसी में होता है और जब जो होता था, बहुत डिफरेंस है। So there is a big difference in there. But then we have the rest of the humanity, and each and every word has its own importance if you think about it. Right? And this is what we are saying, the quota. Īśopaniṣad, everything belongs to Krishna, but then whichever ashram we are in, whichever varna we are in, whichever personal circumstances we are in, based on that we will have certain quota, certain flexibility, certain options will be available to us. We should never try to get someone else's quota. This could be many things. This could be trying to get someone else's job, trying to get somebody's fame, try to get somebody's name. There could be many things. So devotees understand that, and devotees remain grateful for what they have been given by the Lord as their quota. So that's another different chart. So God on the top, then God disseminates the knowledge to Brahman. Brahma, like Krishna did it to Brahman, to Brahmaji. Then to the Kshatriyas, like Brahmaji's sons were Kshatriyas, Uttanpad, Priyavart. Then to the Vaishyas, those who do business. And then the labor class, Shudras. And these days, anyone who works somewhere and get the money as a salary is Shudra, right? And again, of course, you can have multiple of those. And then outcasts. Outcasts are those who don't follow any of those. They don't follow the rules of the Vedic injunctions, like criminals. They will not work hard to get money. They will just steal or do crimes. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान है सबसे ऊपर, भगवान ने वो ज्ञान, वो नॉलेज सबको दी है। जैसे कि कृष्णा ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय अपने उत्तानपाद और प्रियव्रत उनको दी, अपने बच्चों को, वो राजा बने तो वो क्षत्रिय थे। उसके बाद उनके राज्य में जो वैश्य थे, जो बिजनेसमैन थे, और उनके नीचे जो शूद्र थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को पास ऑन करते चले जा रहे हैं, और ये चारों ही वर्ण सोसाइटी में जरूरी है।
कोई अगर एक भी नहीं होगा या एक भी सही से काम नहीं करेगा, या फिर अगर वैश्य ब्राह्मण बन जाएं या वैश्य क्षत्रिय बन जाएं, जैसे हम देखें कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, राइट? तो मे बी दे एक्वायर, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है कि हाँ पहले वो बिजनेस करते थे लेकिन अब वो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है और अपने नेचर भी उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि मिश्रित भी होते हैं। हम एक समय पे दो वर्णों में भी रह सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है हम शुरुआत एक वर्ण से करें और कुछ सालों में हम दूसरे वर्ण में चेंज हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई भी वर्ण दूसरे वर्ण से अच्छा या बुरा नहीं माना जाता। चारों ही वर्ण सोसाइटी में जरूरी है और इक्वली जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको ब्राह्मण ज्यादा चाहिए, शूद्र कम चाहिए, या ब्राह्मण होने चाहिए और शूद्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए, या क्षत्रिय होने चाहिए वैश्य नहीं होने चाहिए, या अच्छे क्षत्रिय होने चाहिए अच्छे वैष्णव ना भी हो तो चलेगा। नहीं, ईशावास्यम, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, पर भगवान ने हर वर्ण को अपना अपना कोटा दिया हुआ है। अभी नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड in the wider perspective of the global understanding, right? Communism and capitalism. There was a time, America and Russia. So America said capitalism, spend money, whoever has more money will get the benefits. But Russia said, well, being communist, whoever is the ruler party, and then we will equally divide. But then in the middle, we have Varnashram, which is the most successful out of all these systems. Why? Communism, example, if we are students, and if we say, well, it doesn't really matter who is intelligent, who is not intelligent, we will give equal marks to everyone. Well, no. Those students who lag behind, they will not be encouraged to work hard. And those who are intelligent students, they will be discouraged. So communism will not work. And of course, capitalism, if somebody who is wealthy, which we see a lot of time these days, wealthy businessmen, they become more wealthy, and the poorer, they becomes even more poorer. And the gap between wealthy and poorer keep increasing. So capitalism will not work. But what we have just discussed, Varnashram, that will work. Based on Īśopaniṣad, Krishna has the ownership and proprietorship of everything, and Krishna has given it to as a quota to all four of us. So we don't have to worry about communism or capitalism. We just need to follow four varnas, varnashram. तो हमने देखा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जैसे होता है, कैपिटलिज्म जो अमेरिका के अंदर चलता है, जो कम्युनिज्म जो यूजुअली रशिया में चलता था, और इसी वजह से ये दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सालों कोल्ड वॉर चला और आज भी है। कैपिटलिज्म जिसके अंदर सभी को एक अगर कहीं पे किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो ज्यादा जिसके पास पैसा है वो लेके कम वालों में बांट देंगे। लेकिन उससे होगा क्या, जो कम है वो मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऑटोमेटिक मिल रहा है, और जो ज्यादा अच्छे मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं वो डिस्करेज होंगे कि हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। और हम काफी बार सोसाइटी में देखते हैं, यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो कि अगर काउंसिल उनको बैठकर खाने को पैसा दे रही है तो वो एनकरेज नहीं है कि वो आप बाहर जाके मेहनत करें, क्योंकि इतना पैसा तो उनको घर में ही मिल जाएगा। घर में बैठे बैठे अगर पैसा मिल रहा है तो आप बाहर जाके मेहनत क्यों करोगे। तो ये कम्युनिज्म की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। कैपिटलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पे कोई अमीर है वो और अमीर होता चला जाता है, कि जो अमीर है उसे ज्यादा सपोर्ट करो, वो इंडस्ट्री लगाएगा, जैसे काफी सिटीज करती हैं, काफी स्टेट्स करती हैं इंडिया में, काफी सिटीज करती हैं इन लंदन में ऐसा भी होता है। तो कम्युनिज्म भी काम नहीं करेगा, कैपिटलिज्म भी काम नहीं करेगा, और इन सब के बेनिफिट्स नुकसान हमने देखे हैं। वर्ण आश्रम जो हमने देखा, वो ईशावास्यम कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करें कि भगवान सब ऑन करते हैं और भगवान ने सबको अपना अपना कोटा दिया हुआ है, इसलिए भक्त कभी भी, किसी भक्त की अगर जॉब चली जाए, वो भक्त अगर वाकई में ही भक्त है तो उसको कभी दुख नहीं होगा, कभी चिंता नहीं होगी, कभी एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंदर ऐसा है कि जो जंगल के अंदर हाथी है, जो एक बार में जब खाता है तो मन खाता है, टन मन बहुत खाता है, और कहीं वो इकट्ठा करके नहीं रखता, एकत्र करके नहीं रखता।
जब उसे भूख लगती है तब खाता है। ऐसे ही जितने भी जानवर हैं कौन देते हैं? भगवान ने सबका कोटा इकट्ठा किया। अगर हम अपनी डाइट के हिसाब से भी देखें, हमारी लाइफ के अंदर हमको दिक्कत तब आती है जब हम अपनी डाइट को अनबैलेंस कर लेते हैं। जो हमारे कोटे, जैसे हम अगर माने कि जो अभी ओमिक्रॉन चल रहा है या कोविड हुआ, एक बैट को खाने की वजह से अगर ये हुआ, तो बैट ह्यूमंस के लिए खाने के लिए कोटा नहीं है। तो जब हम अपने कोटे से बाहर निकल के, हमको भगवान ने कोटा दिया है कि आपको जितने पैसे मिले हैं उससे आप एक अच्छी कार ले सकते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी ने ज्यादा अच्छी कार ले ली, हमारे नेबर ने, तब उनकी कार को देख के हमको अपनी कार के ऊपर जो प्रेम था वो कम हो गया। हमारी कार बिल्कुल वैसे ही है जो कल तक बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज नेबरहुड के अंदर एक और अच्छी कार आ गई, तो अब हमको अपनी कार के ऊपर जो स्नेह था, प्यार था, वो कम हो गया। क्यों? हम दूसरे के कोटे के ऊपर नजर लगाए रखते हैं। सो व्हेन we are attractive towards something which is not part of our quota, then that's going to hurt us. And if we are just going to be content, whatever we have, that doesn't mean that the devotees will not work hard to get more. But when we get more, we need to understand Krishna has given it more. क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं लेकिन फल के अधिकारी नहीं हो सकते। तो कर्म करना हमारे कोटे में है, उस कर्म से जो मिले वो हमारे कोटे में है, लेकिन जो नहीं मिले उसके लिए अगर हम व्याकुल हों, वो हमारे कोटे में नहीं। तो यहाँ पे कंपैरिजन आता है कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन का। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो प्लांट्स हैं क्या वो फील नहीं करते? तो साइंटिफिकली वो फील करते हैं, लेकिन उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। नेचुरली अगर हम देखें तो क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाएगी अगर उसको काटेंगे नहीं टाइम से। जैसे फल की बात करी, फल वो गिर ही जाएगा पक के, हालांकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री की वजह से शायद पकने से पहले ही ले लेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। लेकिन नेचर की अगर बात करें तो वेजिटेबल हमारे कोटे में है। इंट्यूटिवनेस की भी हम बात करते हैं कि अगर 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 हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे घर आके हमको ये कहें कि आज हम एक फार्म हाउस गए थे, तो हमको अच्छा लगेगा, फार्म हाउस गए थे। लेकिन अगर बच्चे आके ये कहें कि कल हम स्लॉटर हाउस जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को दिक्कत होगी, इवन दोज हु ईट नॉन वेजिटेरियन। तो जो फैमिलीज नॉन वेजिटेरियन खाती हैं उनको भी ये इस बात की दिक्कत होगी कि हमारे बच्चों को स्लॉटर हाउस में ले जा रहे हैं। लेकिन फार्म हाउस में ले जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप पेड़ से अगर कोई फल फूल तोड़ रहे हो या आप अगर फील्ड में जाके फल फूलों के साथ में खेल रहे हो। लेकिन वही अगर आप स्लॉटर हाउस में जाके देखोगे तो आपको जरूर दिक्कत होगी, आपके बच्चों को दिक्कत होगी, आपको अपने बच्चों को भेजने में दिक्कत होगी। लेकिन सिर्फ हम अपने टेस्ट की वजह से अगर नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि वो हमारे कोटे के लिए नहीं है। तो अगर हम इस चीज को समझें, सोचें, तो हम समझ सकते हैं। कैनाइन टीथ की हम हमेशा बात करते हैं, दैट lion has those teeth. Lion doesn't need to cook any anymore, right? Or bake. Lion can have it straight away. We cannot. जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड है, कितनी दिक्कत होती है उसको डाइजेस्ट करने की। नॉट ओनली a lot and lot of things go along with it, and so there are a lot of things. So this explains what is in our quota, what is not in our quota. Now even in vegetarian we have talked about that Vaishnavas will cook vegetarian and then offer it to Krishna and then have it, right? So this is what we need to understand, that when we will offer it to Krishna and take it back as prasad, then it becomes our quota. Otherwise the food is going to trouble us. अगर हम भगवान को ऑफर नहीं करें, भगवान के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो नहीं करें कि भगवान की वजह से हमको ये मिला है, और अगर हम वो खाना खाते रहेंगे, तो भगवत गीता के अंदर आता है कि भगवान को ऑफर किया हुआ खाना
जो खाएगा वो ऐसा होगा कि वो पाप खा रहा है। और अगर हम सोचें तो बात सही है कि उससे हमको घमंड होगा कि ये हम अपनी मेहनत से लेके आए, लेकिन अपनी मेहनत से लेकर आने से, बनाने से और भगवान को ऑफर देने के बाद अगर हम लेंगे तो हम ये चीज ध्यान रख पाएंगे कि भगवान ने हमको बुद्धि दी है जिसकी वजह से हम ये पैसा कमा पाते हैं और हम ये खाना खुद और अपनी फैमिली को दे पाते हैं। तो इसका थैंक यू, ग्रेटिट्यूड अगर हम भगवान के लिए एक्सप्रेस करेंगे तो हम हमेशा, हम कभी वो कार्मिक सर्कल में नहीं फंसेंगे। कृष्णा confirms his proprietorship in 7:14। So, बहुत ही अच्छा वर्स है जिसके अंदर भगवान बताते हैं ये सारी चीजें मुझी से आती हैं। हम कहते हैं हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, और उसके आगे भी अगर हम, तो पंचभूत हमारा ग्रॉस बॉडी है, उसके बाद माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारा सटल सूक्ष्म शरीर है। तो ये दोनों ही शरीरों के अंदर मिलाकर 8 चीजें यूज होती हैं। 5 स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी, 3 मन, बुद्धि, अहंकार सटल बॉडी। तो ये 8 ही चीजों को हम देखें तो ये भगवान से आ रही हैं, और हम जो भी कर रहे हैं इन 8 चीजों से ही कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं इंटेलिजेंस है, भगवान कह रहे हैं मैंने ही दिए हैं और ये मेरी ही एनर्जी है, मुझी से आया है। तो अब इसके अंदर हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपना कुछ कह सकते हैं? नहीं। तो बहुत अच्छे से ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि नारद पंचरात्र में समझाया गया है, विष्णु स्तु तृण रूपाणी। तो ये हमने डिस्कस किया है पहले, गर्भदक्षाय और शिरोदक्षाय विष्णु के लिए। तो दिस इज हाउ वो वी अंडरस्टैंड। ओके, अपरियमितस्तन्यां प्रकृतिं विधि में पराम जीवभूतां महाबायो यायतं धारते जगत। Everything material and spiritual is Krishna's will. So not only mantra 1 is saying, many verses in Bhagavad Gita explains that. Many verses explains that. So we have 4 minutes left. Let's stop it here and check if we have, if that makes, let me just close that. So अभी तक हमने जो डिस्कस किया ईशावास्यम कंसेप्ट के बारे में और कोटा के बारे में, उसके अंदर अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बताएं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। राइट, इसके अंदर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया जैसे कि हमारा हाथ है, अगर मैं वापस हम शेयर करते हैं स्लाइड्स को, ये राधे श्याम प्रभु जी की स्लाइड्स हैं जिसके अंदर कुछ बहुत अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रभु जी ने। श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं हाथ का। अगर हाथ खाना ले और कहे मैं इंजॉय करूंगा तो हाथ नहीं इंजॉय कर पाएगा। हाथ मुंह में खाना डालेगा, खाना पेट में जाएगा तो पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। So the hand itself could not do anything. But if hand is connected to the body and feed the stomach through the mouth, then the whole body will get nourished, including the hand. And this is what we say, the quota of the hand is to feed the mouth, and automatically the hand will get nutrients. तो इस चीज को हम कोटा कह सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी हैंड के पास है, हैंड डिसाइड कर सकता है कि मुझे खाना है कि मुझे खाना मुंह में देना है कि नहीं देना। मुंह में देंगे तब पूर्ण रूप से हाथ को जो पौष्टिकता चाहिए वो मिल जाएगी। अगर यही हाथ शरीर से अलग हो जाए, अगर कोई ब्रांच पेड़ से अलग हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से ईशावास्यम हमारी वैल्यू तभी तक है जब तक हम भगवान से लगे हैं। इसी वजह से हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कितने ही लोग नेम, फेम
हम जितनी भी चीजों के बारे में सोच सकते हैं और जिन चीजों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज इकट्ठा करते हैं, स्टॉक्स लगाते हैं, शेयर्स लगाते हैं, लेकिन अगर हमने अध्यात्म नहीं दिया तो वो ऐसे है कि जैसे हमारे शरीर से हमारा हाथ कट गया, एक पेड़ से एक ब्रांच कट गई और उस हाथ को और उस कटी हुई ब्रांच को हम डेकोरेट कर रहे हैं। डेड बॉडी को डेकोरेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। डेड बॉडी पार्ट को डिसकनेक्टेड, जो कनेक्टेड नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम जितने भी अच्छा टीवी ले लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, जितना अच्छी क्वालिटी का वो हो। इसलिए क्योंकि हम सत्य चित्त आनंद है, भगवान खुद कहते हैं मां में वामशो जीव अलोका जीव भूता स्थान। भगवान सत्य चित्त आनंद है, भगवान के ही पार्ट हम हैं, हम भी सत्य चित्त आनंद है, लेकिन हम क्यों फील नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम भगवान से कनेक्ट नहीं है। हम ऐसे टीवी हैं जो कि सोर्स इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं है, हम खुद ही इंजॉय करना चाहते हैं। हम वैसे हाथ हैं जो पूरी बॉडी के बारे में नहीं सोच रहे, जो जिससे कनेक्ट होना चाहिए, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहिए, हम ईश्वर के बारे में नहीं सोच रहे। हम अपने कोटा जो हमारा है उसको छोड़ के दूसरा जो कोटा है जो हमारा नहीं है, हम उसके बारे में सोचें। हरे कृष्ण। तो हमने आज मंत्र 1 ईशावास्यमिदं शरणम यत्किंच जगतम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागधा के बारे में डिस्कशन किया। भगवान के ही लिए सब कुछ है और हमारे कोटे में क्या है क्या नहीं है। So let's stop it here and take the whole week. Let's discuss. When we'll come back, we will see if there are any questions, any comments on this concept, and we will discuss. Otherwise, we will move on to mantra 2 and the same concept of Īśopaniṣad and Magadha. We will keep discussing them in relation to rest of the verses as well. So I hope you found the session useful. How mantra 1 itself is good enough for us to get enlightened. With that, Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhuji. Well explained. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Samved Bhakta Vrinda ki jai. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. Hare